Palavangadi Ganapati Temple. So we are at Palavangadi, the road leading to the East Fort, which is the local bus station. We talk about the historic Palavangadi Ganapati Temple. The origin of the temple dates back to about 1775 AD. As we come back to the visual of the Holy Hearth at the Attukal Bhagavathy Temple, which would be lit approximately around 10:15 a.m. today. And once the Holy Hearth, which is decorated with flowers, once that is done, then the lakhs and lakhs of devotees, and it's estimated that 40 lakh devotees have congregated at Thiruvananthapuram alone across 58 wards to offer Pongala. As we take you to different parts of the city, this is the central bus station, and cutting across to now a visual of the Trivandrum railway station, which has a very distinctive colonial design. And you can see the hearths lined up on both sides of the road, and on the left, where the auto takes a turn, is the Ponnara Sridhar Park. As we go back live to the Attukal Bhagavathy Temple, where the devotees are lined up waiting for the signal once the Holy Hearth of the temple is lit, and then Trivandrum would turn into a Yagashala, as we would see, and it's a wonderful sight as the ladies have done their basic preparation for the Attukal Pongala, where they have all the things ready to make the offerings. The hearths are typically made from earthen pots, which are put on fresh red bricks. And then the ladies have made arrangements where they make the offering of the Pongala. And these are visuals coming to you from the Attukal Devi Temple. The Pongala is an offering of rice which is boiled until the thick foam, white foam will spill over, and that's the signal where the Devi has blessed the offering. As we get back to the visual of the central railway station, the rail first reached Thiruvananthapuram city way back in 1918. Just to give you some added highlights as we look at the visual of the Trivandrum Central Railway Station with its colonial style building, and back to the Attukal Temple, where the devotees are now lining up to go to the temple and do their worship before they get back to their appointed place in front of their hearths, and waiting for the signal to offer the Pongala. The Attukal Pongala has featured twice in the Guinness Book of Records as the single largest congregation of women for a single event on a single day anywhere in the world. സംഘകാലത്ത്, അതായത് ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കാവേരി പട്ടണത്തിലെ ഒരു ധനികനായ വ്യാപാരിയുടെ മകനായ കോവലൻ, Attukal Amma, the deity of Attukal Temple, is believed to be the reincarnation of Kannagi. Kannagi and her husband, who lived in the seaside town of Kaveri, had a very happy life, and then suddenly a dancer called Madhavi came into the life of Kovalan and took away all his valuables. And then Kovalan was reduced to penury, and he realized his mistake, and he came back to the pious lady that Kannagi was, and the couple moved from Kaveri to Madurai to start a new life.
രാജധാനിയായ മധുരയിലേക്ക് കുടിയേറുകയും ചെയ്തു. Kannagi offered one of her golden anklets. She had two of them, and she offered one of them to Kovalan so that he could go and sell it and get some money to start a new life. And when he was on the way, he was caught by some security guards connected with the palace, accused of stealing the anklet of the Rani, which was missing at that point of time, and he was beheaded. And Kannagi then heard it, and she came to the court of the Pandya king, her eyes blazing, seething with anger, and it is said that the fire destroyed the city of Madurai. And then Kannagi moved towards Kodungalur in Kerala. En route, she reached Attukal, where she was received with flowers by the devotees at Attukal with lamps lit, and the Devi then decided to take her appointed place at the Attukal, which then later developed into the temple and into the very famous Attukal Bhagavathy Temple that we see today, which, as I said, has featured in the Guinness Book of Records twice. First in 1997, when 15 lakh people, 15 lakh women were estimated to have offered Pongala. And then in 2009, the Guinness Book authorities did a revisit where they found that the estimated number of women to have offered Pongala has jumped to 25 lakh. And this is way back in 2009. So 16 years on, today it is estimated that about 40 lakh ladies would be offering Pongala today. अम्बे नारायण, देवी नारायण, लक्ष्मी नारायण, भद्रे नारायण। आदरणीय भक्तजनों, आप सबको मेरी भक्तिपूर्ण नमस्कार। अब आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो दूरदर्शन डीडी भारती द्वारा आपके लिए सीधा प्रसारित किया जा रहा एक मंदिर महोत्सव है। यह मंदिर भारत के दक्षिण शोर पर स्थित राज्य केरल में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित इस मंदिर का नाम है आट्टुकाल श्री भगवती मंदिर। जैसे कि आप दृश्य देख रहे हैं आपके टीवी के पर्दे पर, मैं धीरे धीरे आपको ये बताता जाऊंगा कि इसका इतिहास क्या है। कई इतिहास है इसके पीछे, कई मशहूर कहानियां हैं इसके पीछे, लेकिन इसमें एक ऐसा है कि इस महत्वपूर्ण तोमर के समृद्ध इतिहास में एक ये जो है कि केरल के पास का राज्य तमिलनाडु में तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम नामक महाकाव्य से मिला हुआ है और उसमें की नायिका जो कन्नगी है उनकी कहानी से जुड़ा हुआ है। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं ക്ഷേത്രോൽപത്തിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന കഥകളിൽ പ്രധാനം ആറ്റുകാൽ പ്രദേശത്തെ behind the Attukal temple dates back centuries ago, where a prominent member from the very famous local family called the Mullavidu Taravadu was having a bath in the Killi river when he was approached by a young girl who wanted to go across the river. This gentleman, Parameshwaran Pillai, took her across,
and then the young girl vanished, and in the night the Devi appeared in the form of the little girl, all decked up in finery, and she told Parameshwaran Pillai that she is pleased with his devotion and that she will be here as a protector of the land and go and set up an abode for me where you would find a marking in the local carver. So the next day morning, Parameshwaran Pillai went to the local carver where he found 3 markings as if made from a trishul. He shared the news with people in the area, and with their collective efforts, they built a small temple for the Devi at the very same spot. And the temple has developed fame and name and reached the status it has today. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। Let us take you through the preparation for the Attukal Pongala, which starts with the devotees making an offering to Lord Ganesh, and then they have the basic items ready for the Pongala, which has coconut shavings, rice, jaggery. They are making a preparation for what is called the mandaputta, which is a traditional steamed ball made from rice flour, and it has got green gram powder, jaggery, scraped coconut and cardamom. अब जो देख रहे हैं ये लोग तैयारियां कर रहे हैं पोंगाला बनाने के लिए। जैसे कि मैं बताया था, इसके पीछे एक लंबा इतिहास भी है। अब धीरे धीरे सुबह का वक्त हो रहा है, सूरज गर्म हो रहा है। उसका ना परवाह करते हुए औरतों ने पूरी भक्ति के साथ बैठे हुए हैं खुला मैदान में, रोड्स में, हर जगह वो इकट्ठा होकर तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि चावल, नारियल और गुड़ को मिलाकर वो अपना जो गंजी बनाना चाहते हैं, वो उसको हम बोल सकते हैं कि मीठा सा खीर होता है वो, जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पोंगाले की तैयारी हो रही है और आप देख सकते हैं कि कितने महिलाएं, लाखों महिलाएं एकदम एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और अब जैसे आप दृश्य देखते जाएंगे, मैं थोड़ा आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊंगा, जो मैं पहले बताया था आपको कि तमिलनाडु के सिलपदिगारम की कहानी की नायिका कन्नगी के कहानी से जुड़ा हुआ है। कन्नगी जो एक 2000 साल पहले करीबन, अब देखिए आप जो दिख रहा है वो तैयारियां हो रहे हैं, पकवान हो रहा है। थोड़ी देर बाद चूल्हा जलाया जाएगा, उसके बाद ये पकाया जाएगा। उसके बाद बड़ी भक्ति के साथ ये देवी के पास अर्पित कर देंगे। और ये महिलाएं जो उनके दिल की जो भी तमन्ना है देवी के पास बोलेंगे। आज ये ऐसा करते हैं कि आज एक नई मिट्टी का बर्तन जो हंडी है ना, उसको ले लेते हैं। उसके बाद वो हंडी को इंसान का शरीर माना जाता है और उसके अंदर जो चावल, नारियल और गुड़ वगैरह व्यंजन डालते हैं, उसको तो समझते हैं कि इंसान के भौतिक
इच्छाओं, जैसे कि हमें हर तरह की चाहत होती है दुनिया की, इच्छाओं को उसके अंदर डालकर उबालते हैं वो लोग, उसको जलाते हैं, उसको पकाते हैं। और ये माना जाता है कि जैसे कि ये पककर उबल के आ जाता तो उनके दिल के जो भी कामना है, जो भी अरमान है, जो भी मन्नत है, वो कामयाब होगी। देवी का आशीर्वाद मिल गया, देवी ने उनकी पूरी दुआ कबूल कर दी और आगे उनकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी होगी, शांति होगी, सुख होगा, समृद्ध होगा। इसके लिए औरतों अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इतनी दुआएं मांगते हैं, इतनी भक्ति के साथ, इतनी क्या कहते हैं कि धीरे धीरे धूप के परवाह ना करते हुए पूरे भक्ति के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो तो शुरुआत की तैयारी हो रही है। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। മാർച്ച് 13-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ പൊങ്കാല മഹോത്സവമാണ്. അതിന് സമയം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് 10:15 അടുപ്പുവെട്ട് ചടങ്ങോടുകൂടി പൊങ്കാല ആരംഭിക്കും. ഈ അടുപ്പുവെട്ട് ചടങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മേൽശാന്തി കീഴ്ശാന്തിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ദീപം. The chairman of the Attukal Bhagavathy Temple Trust, Sri S. Venugopal, talking about the arrangements made for the festival today, he's saying that at around 10:15 the Holy Hearth, which is in front of the temple, would be lit. Before that there would be Deeparadhana, the Arati at the temple, and then at 10:15 once the Holy Hearth is lighted, there would be the Chandamelam, which would signify the start of the Pongala, and all the ladies, not only in and around the temple but all across, would be offering Pongala at the same time. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊങ്കാലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 പൊങ്കാല നിവേദ്യം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പം ക്ഷേത്രം തന്നെ 300-ൽ പരം പോറ്റുമാരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിവേദ്യം നീതിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും 50-58 വാർഡുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ദൂരം വരെ 4-5 വരെ പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് MC റോഡിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 ചുറ്റും അതേ സർക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ട്.
300 പോറ്റിമാർ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ഈ സമയമാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അതാത് ഏരിയയിലുള്ളവർ, വാർഡുകളിലുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ പോറ്റുമാരുടെയും അവരുടെ തീർത്ഥവും കൂടെ കൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. തീർത്ഥത്വം അതോടുകൂടി പൊങ്കാല നിവേദിച്ചതോടുകൂടി ഭക്തജനങ്ങൾ പൊങ്കാല ഇട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തവണ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. अभी आप देख रहे थे गोपाल जी को, जो अट्टुकल भगवती मंदिर का ट्रस्ट है उसके चेयरमैन हैं। वो बता रहे थे आप लोगों को कि क्या क्या तैयारियां उनके तरफ से हो चुके हैं और किस तरह से इस साल का इस पोंगल को 2025 का ये जो उत्सव है इसको बेहतरीन तरीके से मनाने के लिए किस तरह से क्या क्या तैयारियां किया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि पोंगल का तैयारी हो रहा है, सब लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि दीपाराधन होगा, आरती निकलेगी, 10:15 बजे करीबन शुरू होने वाला है। इसके लिए धूप का ना परवाह करते हुए अपने छातों को निकालकर अपनी सुरक्षा भी करते हुए औरतें एकदम पूरी भक्ति के साथ इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त के लिए जब दीपाराधन के बाद कर्मचारी बाहर आएंगे और आरती के बाद करीबन 10:15 बजे शुरू होगा पोंगल का चूल्हा जलाना। चूल्हा जला के उसके अंदर चावल, नारियल और गुड़ वगैरह व्यंजन डाल के जब पोंगल बनाएंगे, पोंगल जब उबल के आता है तो वो लोग ये समझते हैं कि हमारा शरीर जो है, शरीर के अंदर जो भौतिक इच्छा है वो उबल रही है, वो उबल के देवी के चरणों पे समर्पित कर रही है। जैसे कि पोंगल ये जो है, ये जो गंजी है, ये जो खीर है जो पक रहा है अपनी मिट्टी की हंडी पर, जब जैसे वो उबल रहा है, उबल के आ रहा है, जैसे भी ये पोंगल लेके वो देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, अपने मन की तमन्ना, अपने मन की अरमाने, अपने मन्नत पूरी तरह से वो देवी के चरणों में पेश कर रहे हैं और ये उम्मीद के साथ जाएंगे कि अगले साल तक उनकी वो पूरी मन्नतें, मुरादें हासिल होगी और उनकी हिफाजत होगी। देवी उनकी सुरक्षा के साथ उनकी ज़िंदगी को आगे लेके जाएंगी। जो भी वो मांगे हैं, जो भी वो पूछे हैं, उनको ज़रूर कामयाब होगा। ये उम्मीद के साथ, ये अरमान के साथ, पूरी बड़ी इंतज़ारी के साथ लाखों महिलाएं, ऐसा हुआ है कि इस जो त्योहार आ रहा था, देखने को मिल रहा था। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से मॉरिशस के झंडे लेकर हाथों में, वहीं भारत के तिरंगा ध्वज को हाथों में लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। बेहद खुश, बेहद उत्साहित मॉरिशस में मोदी मैजिक किस तरह से देखने को मिला, वो वीडियो हम आपको साझा कर रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो दोनों तरफ लंबी लंबी कतारों में मॉरिशस की जनता, मॉरिशस के लोग खड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन्हें मोबाइल में कैद करने के लिए ये लंबी लाइन में लगे हुए नजर आए। अर्पण करना, ये सब दुनिया के कोई भी कोने में आप देख नहीं सकते। आज हम ये समझते हैं कि 2025 से 2025 में कम से कम 40 लाख महिलाओं तो सम्मेलन करेंगे। ये उम्मीद के साथ इसके लिए जितना भी बंदोबस्ती करना है, सब कर्मचारी, मंदिर के कर्मचारी ही नहीं, वहाँ की पुलिस, वहाँ के गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं, सब लोग इतनी हिफाजती के साथ, आप देख सकते हैं कितना सफाई के साथ, कितनी बहुत कोशिश के साथ। अब देखिए, रोड भी देखिए, आप लोगों को देखिए, आप कितना सफाई के साथ, कितना शान के साथ, कितनी भक्ति के साथ और कितना डिसिप्लिन के साथ। वो बड़ी बात है कि जब भी लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ यही होता है कि वो तमीज़ या तरीक़ा हाथ से निकल जाता। यहाँ केरल का ये एक फ़ायदा है कि जैसे कि ये लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वो जो संस्कृति है उनकी वो ऐसी है कि उनका वो बनावट है, उनका वो तरीक़ा है, उनका वो जो रीति है, उनकी संस्कृति आपको वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका काम करने का तरीक़ा, जितना कम तकलीफ़ कर्मचारियों को हो, पुलिस को हो, उतना कम और जितना पुलिस और कर्मचारी इनके साथ जो मदद कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा वो लोग इनको भी मदद कर रहे हैं। और ऐसा है कि बड़ी शांति के साथ आप देख रहे हैं कि विदेशी लोग भी
विदेशी लोग भी आए हैं देखने के लिए, वो तो हैरान हो रहे हैं कि अरे भाई ये केरल में क्या हो रहा है। नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। On the day of the Pongala, women who have taken penance, vritam as we call it in Malayalam, for the past minimum 3 to 9 days, because today is the 9th day of the Pongala festival. The festival runs for 10 days and culminates tomorrow. So they have a bath early morning, dress in either fresh clothes or new clothes, and then take their appointed place in the already kept ready hearths, which are made of red bricks from clay. They also have all the ingredients ready, like rice, jaggery, scraped coconut, sliced plantain, sugar crystals, dried raisins, cashew nuts, ghee, and all the other arrangements are also ready so that the fire is lit at the appointed time as soon as the signal is received from the temple. The fuel which is used for cooking the Pongala are dried coconut palm leaves and the dried outer covering of the coconut flower, and that will keep the fire burning on the new red clay pots mostly used. Some ladies do use aluminum utensils, but traditionally the Pongala is made on new red clay pots. As we see a visual of the very famous Ganapati Temple. And we're back live at the Attukal Devi Temple. The temple faces north, and as we go back to Paravangadi, the visual of the Ganapati Temple, which dates back to 1765, when the idol was first discovered. Very interesting fact of the Paravangadi Ganapati Temple is that it is maintained by the Madras Regiment of the Indian Army. The reason being that the idol was discovered, as I said, way back in 1775 by a member of the then Nair Brigade, which used to command the defense of the erstwhile Wayanad kingdom. Sharanamaham prabhati. Attukalambikam devim sharanamaham prabhati. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. എൻ്റെ പേര് പ്രീത. ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തൃശ്ശൂരാണ്, കുവൈറ്റിലാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട്. 2 വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആറ്റുകാൽ, ഇത് 2ാമത്തെ വർഷമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടാൻ വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് രാജശ്രീ. ഞാനും കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് 2ാമത്തെ വർഷമാണ് പൊങ്കാലയ്ക്ക്. ആദ്യത്തെ വർഷം വന്നു വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ശക്തിയിൽ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരും. സോണി, കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 2ാമത്തെ വർഷമാണ് പൊങ്കാല ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. ആശ കാരണം വളരെ അടുത്തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റി. Ladies who have come here to offer Pongal today, they are saying that they are regulars here and they come here to seek the blessings for the entire family because they are representing the family and coming to offer the Pongala, which is a wonderful occasion for them dressed in fresh new clothes. അപ്പോൾ ഉത്സവത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഈ ഒരു ദുഃഖ സമയത്ത് കൂടി ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ നാമത്തിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നു. പൊങ്കാലയിടുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം
प्रपद्ये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो। बड़ी बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है, तैयारियां हो रही। क्यों ना मैं आपको थोड़ा इतिहास के बारे में थोड़ा बताऊं। जैसे कि आप दृश्य देखते जाइए, दृश्य देखते रहिए, तो मैं आज साथ के साथ आपको थोड़ा बताऊंगा कि वो इतिहास क्या था। वो जो कन्नगी का जो कहानी था, उसके अनुसार तमिल के मदुरै के राजा ने the front facade of the temple, there is the sanctorum resplendent in gold plating. The temple has striking Dravidian architecture blended with Kerala style architecture, resplendent idols which depict various points from the various Puranas. And this is the resplendent gold plated temple tower of the Sri Padmanabha Swami temple at the back, and in the forefront coming into view with copper plated covering of the temple is the very famous Parliamentary Ganapati Temple. The long shot at the back is the Sri Padmanabha Swami temple, which is one of the richest, if not the richest temple in India. This is back to live to the Attukal Devi temple. The temple faces north and the Devi is seated facing north. The idol of the Attukal Amma is made out of jackfruit wood, which is called the Darishilpam, with the Devi holding the Trishul, a sword, a shield and a goblet atop the Vedal. As the authorities, the temple authorities, the senior police authorities here, the MLAs, other prominent citizens of the city, they're all here waiting for the appointed time when the temple hearth, the holy hearth, will be lighted. We see Mr. Shashi Tharoor, the Member of Parliament from Thiruvananthapuram. A lot of other dignitaries, including MLAs, former MLAs, the Mayor of Thiruvananthapuram, authorities representing the Attukal Devi Trust, everybody is there, and we see the temple hearth with the striking column, which is a geometrical drawing which is made using colored rice powder. This is the Sanctum Sanctorum, where we talked about the idol of the Devi made in Darishilpam jackfruit wood, and in front of the Darishilpam, the idol of the Devi, we will see a Karma Bimbam, which is used typically for the Abhishekam and also for processions. Today, estimated about 40 lakh people have congregated in Thiruvananthapuram alone across 58 wards. They have now the arrangements in place because they're now impatiently waiting for the signal from the temple, because they've everything in place to cook the offerings. And basically there are 4 different types of offerings made to the Devi as part of the Pongala. As we see visuals of the ladies congregated around the Attukal temple. The 4 different types of offerings made are cooked rice. The second one is payasam with rice, jaggery, scraped coconut, ghee, sliced plantain, raisins, cashew nuts, cardamom,
honey and white sugar rock candy. The other two items are terali and mandaputta, which we'll talk about in detail later. ശരണമഹം പ്രപത്തി. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ടോയ്ലറ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അന്നദാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വരുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ, അതായത് ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു. The president of the Attukal Bhagavathy Temple Trust, Srimati V. Shobhat, was talking about the arrangements for the festival, and she was saying that more people are expected this year and all the arrangements have been made so that the festival, which involves lakhs and lakhs of devotees, not just in Thiruvananthapuram, but across the world. And I'm not exaggerating when I say that, because today you would hear stories of people offering Pongala across the other 13 districts in Kerala, across various points in India, mostly attached to temples, and then abroad, where, for example, if you take USA, or precisely let's say New York, because there are different timings in USA, where we're close to midnight when the Holy Hearth would be lighted at Attukal Devi Temple. At the same time, we will have devotees making the offering either at their homes or at a temple. And here, holy water from the Sanctum Sanctorum, the rose water, is being sprinkled on the Holy Hearth by the chief priest. Standing opposite him, you would see Madhu Ashan, who is the lead singer of the Kotam Pata. We will talk about the Kotam Pata, which happens over 10 days at the Attukal festival, which is a major event here. So we'll have visuals of that and we'll talk about that in detail. Madhu Ashan is the person who is designated, because he is the lead singer of the Kotam Pata, he is the person who is designated to do the cooking of the Pongala in the Holy Hearth, which is lined with flowers and also with geometrical drawings called Kotam, which is done using colored rice powder, backed live at the forefront of the Parliamentary Ganapati Temple and back live at Attukal. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ
ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. എൻ്റെ പേര് സുനിതയാണ്. ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ 10-15 വർഷമായിട്ട് വരികയാണ്. ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ പൊങ്കാലയിടാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു നല്ല എൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്, പക്ഷേ പൊങ്കാലയ്ക്കായിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. എൻ്റെ കാര്യം നന്നായിട്ട് നടന്നു. ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വരും തന്നെ വിചാരിച്ചില്ല. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാനത്തെ ടിക്കറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ബുക്ക്ഡ് ആയത്. വ്രതം നോറ്റിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നത്. 10-15 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വ്രതത്തിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ Ladies who are regulars at the Attukal Pongala very happily talking about their experiences over the years and what they're looking forward to this year, and also about the penance that they have taken over the last 9 days marking this Attukal festival. The Sanctum Sanctorum at Attukal കുംഭമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാളിൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് തോറ്റം പാട്ട്. Today is the 9th day of the Attukal Temple Festival, and the festival starts on day 1 with 3 people singing the Totem song, invoking the Kodungalur Amma and requesting the Bhadragali Devi of the famous Kodungalur Temple, beseeching her, requesting her to please travel to Attukal to take her appointed place in the Sanctum Sanctorum. And once the Devi is invoked, the next ritual is the Kappagettal. Kappa means a bangle made of Panchaloham, an alloy of 5 metals: gold, silver, iron, copper and lead. And once the Deeparadhana is done on day 1, then the Deepam is taken towards the Pandal where we have the Totem Pata, and during that journey the Deepam is not touched by any devotees. You can see it is held up very high, and then we reach the Pandal, the green Pandal, where the Totem singers take their blessing. And then the Deepam goes back, and there it is offered to the devotees, and we'll see the Totem singers backed by the musical instrument called Kulithalam. शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ
सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെയധികം ഭക്തജന പ്രവാഹമാണ് ദിവസവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്സവം തുടങ്ങിയ ശേഷമാണെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പൊങ്കാല ഇടുന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തുകയും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് The Joint Secretary of the Attukal Bhagavathy Temple Trust, Sri Anumod, talks about the preparations for the festival. In fact, the Temple Trust announces the date of the festival 6 months ahead during October. They form different committees and then they start their preparations. And if we look at the entire arrangement made today, it is not just the Attukal Temple Trust which is involved. They are involved in all the activities at the temple in and around. But other agencies, the governmental agencies, are all hand in hand to ensure that the smooth conduct of the Attukal festival happens today. The Thiruvananthapuram Corporation, the water authorities, the electricity board, most importantly the police, the fire force, everybody comes together to ensure that everything works out so smoothly, because we are talking about a huge crowd, not in hundreds, not in thousands. We are talking about 40 lakh people in Thiruvananthapuram alone. So imagine the kind of crowding, because if we look at Thiruvananthapuram city, the estimated population is about 11.5 to 12 lakhs. So when we're talking about ladies alone, 40 lakhs, then we can understand the impact with people coming from various parts of Kerala, from across the country, gathering today, making this the largest congregation of women marked by the Guinness World Record. ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അനുചരന്മാരായി ബാലകരെ നിർത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് കുത്തിയോട്ടം. Major offering at the Attukal Bhagavathy Temple is the Kuttiyotam of boys below the age of 13, the offering made by various devotees. And this year 591 boys are taking part in the Kuttiyotam ceremony, where it starts from the third day of the festival. Today is the 9th day, so for the last 7 days boys are in preparation. It starts with having a bath in the holy temple pond and then moving towards the sanctum sanctorum, where the boys would make an offering of 7 coins. We'll see that in a moment, where they go towards the sanctum sanctorum, make their offering, receive prasad from the chief priest. इसमें जो है कि कुत्ती ओटम ये एक रस्म है, एक रिवाज है जो इसका एक प्रमुख रिवाज है. ये कुत्ती ओटम तीसरे दिन, जैसे कि मैं बताया था आपको, ये पूरा पोंगाला का जो महा उत्सव होता है 10 दिन का होता है. 10 दिन में 9वें दिन यानी कि आज का दिन पोंगाला चला जाता है, लेकिन 3वें दिन जब इसकी शुरुआत होता है तो वहाँ का रस्म है, रिवाज है, जो आप आपके टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं, उसको कुत्ती ओटम कहा जाता है. इसमें 13 साल की उम्र से कम वाले लड़कों को चुना जाता है. इस साल 590 लड़के शामिल हुए हैं, रजिस्टर किए हैं अपना नाम कुत्तियोटम में शामिल होने के लिए. आप देख सकते हैं कि बच्चे कितनी खुशी के साथ आ रहे हैं मंदिर के अंदर. जो ये पूरे 10 दिन वो बच्चे दूसरे किसी के पास संपर्क नहीं करते, उनको अलग मंदिर के अंदर ही बिठाया जाता है. उनका खाना पीना, रहना, सोना सब कुछ मंदिर का हिफाजती में होता है.
സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. Lighting of lemon lamps is a major offering at the Attukal Bhagavathy Temple. The lemon is cut into exactly 2 halves. The juice is squeezed off completely. The lemon half is inverted in such a way that the outer skin of the lemon can be filled with either oil or ghee and lit as a lamp. And the offering is done with the belief that it does away with Rahu Dosham. So on a typical day, on a normal day at the temple, around 10,000 lemon lamps are lit, but during the Attukal festival, more than 100,000 of such lemon lamps are lit by the devotees, where here we see the oil being poured in the lemon lamp. It can be either oil or ghee, as I said. अब जो देख रहे हैं वो और एक मुख्य घटना है जिसको नारंगा विളക്ക് कहा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि नींबू का चिराग. नींबू जो है, नींबू को 2 करके काट देते हैं, उसको साफ करने के बाद उसके छिलटे के ऊपर तेल डालकर दिया जलाते हैं और इस दिए को भगवान के पास पेश करते हैं. इसको नींबू का चिराग माना जाता है. शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते. आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये. आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये. आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തർ നടത്തുന്ന പ്രധാന വഴിപാടുകളിൽ we see magnificent offerings by devotees which are called velakkakketta, which are hugely decorated
resplendent tall structures which are similar to miniature temple models. They are decked with flowers, with coconut leaves, different decorations of that, colored paper. Small idols or statues of the goddess is placed inside the structure, and they are taken in a procession to Attukal Temple during the first 9 days of the festival, where the devotees would make traditional offerings to the Valakagatta. They approach from different parts of the city because offerings are made by devotees across the city, and they are accompanied by Chandamelam. And these structures are carried on the head of the person who takes the Valakagatta and dances to the tune or the beat of the Chandamelam. ये और एक रस्म है जो आप देख रहे हैं, जिसको विलक्ककट्टु कहा जाता है मलयालम में। अगर हम उसको बोला गए तो चिराग को बांधना। ये ऐसा है कि जो मौस का जो पौधा है उसको कतर के उसके ऊपर छोटे छोटे चिराग जला लेते हैं, और वो चिराग जलाकर देवी को प्रज्वलित करके उसके प्रकाश में देवी की पूजा करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि विलक्ककट्टु अभी बड़ी जोर से हो रहा है। പ്രദക്ഷിണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെയാണ് വിളക്കുകെട്ട്. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ആറ്റുകാലംബികാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते. In a very short time from now, we'll see the Holy Hearth being lighted. So first we'll have the Arati inside the Sanctum Sanctorum of Attukal Devi Amma. The Devi is seated facing north. The idol of the Amma is made out of jackfruit wood. We call it Darishilpam in Malayalam. And it has the Devi holding the Trishul, the sword, a shield and a goblet atop the Vedalam. So Arati would be offered in a few minutes from now, and then we will see the lamp from the Sanctum Sanctorum brought out by the head priest and taken to the southern side of the southeastern side of the temple, within the four walls of the temple, to the small kitchen which is called the Cheriyatadapalli, where all the offerings for the Devi are prepared. So first the lamp from the Sanctum Sanctorum would be taken to the Cheriyatadapalli, which is the small kitchen, the holy kitchen, where the offerings for the Devi are prepared. And then the holy lamp is taken outside the four walls to the second kitchen, where the preparation of food for the devotees are done. It's called the Valyatadapalli, the bigger kitchen. And once that is done, the lamp would be handed over by the head priest to the junior priest, who would then bring it outside the temple. And that is what we are waiting for. They'll come through this pathway. And in a few minutes from now, the Holy Hearth would be lighted, and everybody is waiting for the signal from the temple, because there would be Chandamelam, there would be
announcements over the mic at various points in the city. There are people across the country who are logged on the net, on television, so that they can follow the proceedings at the Attukal Temple to get that immediate signal, so that they can also light their hearts, be it at their homes, be it at a temple. And those who are fortunate, they're here in Thiruvananthapuram, and the more fortunate of them, as you can see, would be at the Attukal Temple compound itself to make their Pongala offering. So the devotees are ready. They have the rice, the jaggery, the scrapped coconut, sliced plantain, sugar crystals, dried raisins, cashew nuts, ghee. Everything is ready. They're waiting to make their preparation. Basically, 4 items are offered by the devotees. The basic offering to the Amma, the Devi, the benevolent protector, the mother of all, the doer away of evil, the benevolent Amma. Basic offering for the Devi is cooked rice. Another offering is payasam, which will have, along with rice, jaggery, scraped coconut, ghee, sliced plantain, visuals of the Parliamentary Ganapati Temple in the forefront, and at the back, standing tall over the Ganapati Temple, is the Gopuram of Sri Padmanabhaswamy Temple. So the payasam is cooked using all the ingredients I mentioned, along with raisins, cashew nuts, cardamom, honey, and white sugar, rock candy, which makes it very, very yummy. The other 2 preparations made by the devotees are terili, which is a sweet made of rice powder and jaggery, steamed in cones made of aromatic vayana leaves. We will see a shot of that once the devotees start the preparation, or the signal is given from the temple, and then we will get close-ups of how each of these items are made. The 4th item made by the devotees is called the mandaputta, which is a traditional steamed ball made with rice flour, green gram. And we see the holy lamb coming out from the sanctorum, with the head priest carrying it across to the holy kitchen, the small kitchen, which is called the Cheriyatadapalli, where the hearth there would be lit by the head priest of the temple. And a few minutes from now, the start of the Attukal Temple festival will happen. This is the holy hearth, which is outside the temple 4 walls. We're waiting for the lamb to come out. So right now the lamb has been taken into the small kitchen, the Cheriyatadapalli, where food and offerings are prepared for the Devi. And we'll see the head priest coming out of the Cheriyatadapalli right now in a few minutes. The head priest would be coming out any minute now, just now, and moving across to go outside the 4 walls and go across through the Nadavadi, which is the outer path around the temple, where the bigger kitchen, the temple kitchen, is located. So the head priest is now going to go from the inner sanctorum area of the temple. He's going to go out into the outer path which circumnavigates the temple, moving slowly across. This is the holy lamp which has been lit from the sanctorum of the Devi, the Amma, after Arati was performed a few minutes ago. And the head priest is now moving. Yes, he's reached the outer pathway. Now we can see the pathway around the temple, moving slowly across to the bigger kitchen, which is the Valyatadapalli, and you see long shot of the Shiva temple behind, which is again inside the temple complex.
Moving into the bigger kitchen, the Valyathodapalli, we see the pathway which leads to the Pandara Aduppu, as it is called in Malayalam, the Holy Hearth, and the devotees are now waiting for the lamp to come outside the temple. आरती होने के बाद मुख्य पुरोहित दिया लेके बाहर आ चुके हैं। उन्होंने पुण्य काम ख़त्म करने के बाद उस दिए से वो चूल्हा जलाने के बाद वो दिए को बाहर लेके लाके अभी वो ऐलान करेंगे कि वक्त हो गया, आप लोग सब अपना चूल्हा जला सकते हैं ताकि पोंगाला तैयार कर सकते हैं। इस ऐलान का इंतज़ार में औरतें खड़े हुए हैं। उधर जो मुख्य पुरोहित अपने मंदिर के अंदर को जो चूल्हा जला के बाहर आ गए आरती लेके, अभी उनका ऐलान होने के बाद पोंगाला बनाना तैयार हो जाएगा। अभी बस 5-10 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा कि पोंगाला का पकवान, और वो करीबन 10-15 मिनट लगेगा। उसके बाद जैसे कि देखिए आप चूल्हा जला रहे हैं, औरतें कोशिश कर रहे हैं, अभी ऐलान आने वाला है, आरती हो गया, दिया बाहर लेके आ गए। अभी थोड़ी देर में चूल्हा जलाने के बाद पोंगाला का पकवान शुरू हो जाएगा। उसके लिए तैयारियां कर चुके हैं। नई हंडी के अंदर चावल, गुड़ और नारियल सब तैयार रखे हुए हैं, और औरतें उसको पकाने के लिए बड़ी भक्ति के साथ प्रतीक्षा खड़े हुए हैं। मुख्य पुरोहित बाहर आ रहे हैं दिया को लेकर, आप दृश्य में देख सकते हैं। बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ मुख्य पुरोहित दिया को लेके बाहर आ रहे हैं। वो दीपक जो उन्होंने बाहर लेके लाएंगे और उन्हें ऐलान करेंगे, तो वहाँ पोंगल का पकवान शुरू हो जाएगा। The Ashtamangaliam lamp will be brought out to the Holy Hearth in a minute or so by the junior priest. The senior priest has just now handed it over to the junior priest, and the Ashtamangaliam lamp would be coming out any minute now. The devotees there with folded hands, waiting for the very auspicious moment which marks the signal. There comes the holy lamp, the lamp lit from inside the sanctum sanctorum, now being carried across through the pathway to the holy hearth called the Pandara Aduppu. This is a very, very significant, pious, most holy moment of the festival. The 10-day Attukal festival. Today is the 9th day, the holy hearth, the Pandara Aduppu, which is now going to be lit. Everybody there in prayers, and the moment has come. The start of the Pongala. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambage Devi Gauri Narayani Namaste. Ame Devi Narayani.
So the preparation is on, where the devotees are first in preparation of the rice. Here in the Holy Hearth, the Pandara Aduppa, the fire is burning to its glory. And the Pandara Aduppa, that is the Holy Hearth, the water is getting boiled. Supervising the preparation is Madhu Ashan, who is the lead singer of the Kotam song. So the first round of preparation would be the white rice, and here at the Holy Hearth, the white rice is prepared, nothing else is added, no jaggery, whereas in the hearts of the devotees, they would be adding a lot of items, as we talked about earlier. They would be adding ghee, they would be adding jaggery, scraped coconut, sliced plantain, and sugar crystals and all that, so that their offering is embellished and becomes very yummy and tasty. So the first round of preparation would be the basic rice. A lot of devotees would be moving on then to prepare items like payasam, terili, which is a sweet made of rice powder and jaggery, steamed in cones. We will get a shot of that. And the Holy Hearth, which is adorned with flowers and with the geometrical drawings called kolam, using colored rice powder. And as soon as the water gets boiled, then we will see the rice being offered to the Holy Hearth, and we'll get you shots of that in a few moments from now, as we're back live around the city, where we are at Parliamentary Ganapati Temple. And then a long shot of the resplendent, magnificent, gold-adorned temple tower of the Padmanabha Swami temple at the background. And there you see that shot of the golden, resplendent golden tower of the Padmanabha Swami temple at the background. And we are planning to take you through the shots at the Tampanur, at the East Fort, where this is the local bus station, and you see the shots of the Holy Hearth on the left, where the water is getting boiled. Then we will have Madhu Ashan, who is doing the preparation. He is the lead singer, the lead totem singer, and he would be making the rice offering at the Holy Hearth. And the preparation is happening across Thiruvananthapuram city, across Kerala, across various points in India, and would you believe it, at various places across the world. Don't worry about the time zones, whether it is a few hours behind
whether it is ahead, whether it is midnight like it is in USA right now. For example, the devotees are preparing their Pongala, be it at home, be it at a temple. And it's a huge, huge moment which we wait for an year. Once the Pongala is done, then the wait happens for the next Pongala year ahead. So that is how it works, and this is the Holy Hearth, where the items used to light the fire or keep it burning are dried coconut palm leaves and the dried outer covering of the coconut flower. And that is what the devotees use. Usually it would be the red earthen pots. That is the traditional way of preparation. On the left of the screen, you will see the Pachapandal. That is where the Kotam song happens during the 10 days of the festival. The resplendent Gopuram of the Padmanabha Swami temple, which dates back to the 8th century, the temple, which is one of the richest, if not the richest in India, has been mentioned in the Puranas. It finds its place in various scriptures over the centuries, and it has been rebuilt by the very famous king of Travancore, Sri Martandavarma, during the 18th century, where Martandavarma then devoted the kingdom to Padmanabha Swami temple and became his dasa, and all the kings have followed that pathway. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോസ്തുതേ.
देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। जैसे कि अष्टमांगल्यम दिया बाहर आग लेके आगे मुख्य पुरोहित, और जब वो मुख्य पुरोहित ने प्रधान चूल्हे को जला दिया उसके बाद ऐलान कर दिया गया तो सब लोग अपना अपना चूल्हा जला के शुरू कर दिए पकवान। पोंगाले का पकवान हो रहा है। थोड़ी देर में इसका पूरा निगहबानी करने के लिए मधु आशान नामक वहाँ के मुख्य आदमी को कर्मचारी बना के रखा हुआ है, जिन्होंने वहाँ के कोटम पाठ बोलकर एक गाना है, एक भक्तिपूर्ण गाने हैं जिसके मुख्य गायक हैं, उनको इसका पूरी अधिकार दिया गया है और वो उनके सुपरविजन के नीचे ये पंगवाला का पकवान बनाया जा रहा है। आप देख रहे थे पड़वंगाड़ी के वो जो इलाका है, पड़वंगाड़ी इलाका, वहाँ के भी दृश्य देख रहे थे। उसके पीछे आप सबसे प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर आप देख रहे थे, जो हिंदुस्तान का सबसे बहुत धनिक मंदिर है। माना जाता है कि इसमें इतनी दौलत है कि हिंदुस्तान में दूसरा कोई भी मंदिर में इतना धन इकट्ठा नहीं होता, और इस मंदिर की इतनी पाबंदी है और इतनी शक्ति है कि वहाँ जाकर कोई भी मन्नत मांगे या पूजा करे तो उसका फल तुरंत मिल जाता है। अब पूरे तरीके से खुशी से पोंगाला का पकवान हो रहा है, पूरे हंडियों में आग लग रही है, चूल्हा जल रहा है। जब आप देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए तो पीछे पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने ये जो इलाका है, यहाँ का जो पोंगाला हो रहा है उसके दृश्य हम आपको अभी दिखा रहे हैं आपके टीवी के पर्दे पर, देख लीजिए। और थोड़ी देर में जैसे कि पोंगाला का पकवान होगा तो उसका बंटवारा होगा, उसके बाद अगला रस्म के लिए, अगला रिवाज के लिए आगे जाएंगे। और बड़ी बेचैनी से औरतें देखिए आप कितने भक्ति के साथ अपना पोंगाला तैयारी करने के लिए उसके अंदर जो चावल है, जो गुड़ है, जो नारियल है वगैरह डाल के उसका हिसाब से उसको ठीक ही उसका मज़ा को थोड़ा भी फ़र्क आए के बिना, उसको पकवान को कोई गलती ना होना, उसमें कोई आग ना लगना, जल ना जाना, ठीक तरह से पूरे मज़े के साथ वो पोंगाला पक के आना, ये इंतज़ार करके खड़े हुए हैं कि उसको प्रसाद के रूप में लेके देवी के पास अर्पित करके अपनी तमन्नाओं को, अपने अरमानों को, अपनी मन्नत को देवी के पास पेश करने के लिए। और इस त्योहार जो महिलाओं का भक्ति, शक्तिग्रहण और एकता का एक प्रतीक होता है, इस त्योहार में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं और इसलिए इसको महिलाओं का शबरीमला भी माना जाता है। शबरीमला जैसे आप जानते हैं कि केरल का बहुत ही एक मशहूर मंदिर का त्यौहार है, जहाँ 10 साल के ऊपर और 50 साल के अंदर तक है सो औरतों का आना मना है। और ये जो मंदिर का उत्सव है इसमें सिर्फ औरतें इकट्ठा होते हैं, इसलिए इस मंदिर का उत्सव को औरतों का शबरीमला माना जाता है। और इस मंदिर में सबसे बड़ा विशेष जो बोलना है आपके पास तो ये है कि वार्षिक महिला सम्मेलन है ये। इतने बहुत बड़ी जनराशि महिलाओं की दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देता, जैसे मैं आपको पहले बताया था। और इसके बाद जैसे पोंगाला तैयार करना, पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करना और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं इस उत्सव के।
त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। എൻ്റെ പേര് അസ്മിയ. ഞാൻ കേരള ലോ അക്കാഡമി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇവിടെ NCC കേഡറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിലാണ് വോളണ്ടിയറായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്നൊരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഇതിന് വന്നത്. ഇവിടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള പൊങ്കാല എന്തെങ്കിലും സഹായം അവർക്ക് ആവശ്യം do a major role at the Attukal Temple. We have thousands of them. Ensuring that the smooth contact is done. Items, essential items, for example, drinking water and health support, everything is offered to the devotees by these very enthusiastic, smart young girls belonging to the National Cadet Corps, and they're sharing their happiness to be part of this festival, the festival of ladies, big festival of ladies at Attukal, signifying Adi Shakti. शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। You see the Holy Hearth, which is being manned by the Kotam singers and the chief person to do the offering at the Pandara Adupu, that is the Holy Hearth, in front of the temple, is the lead singer of the Kotam song, who is Madhu Ashan, who is preparing the offering where the rice has been offered, and you can see the scrapings of coconut there inside the Holy Hearth. You can also see sliced plantain and ghee, and the major significance of the offering prepared at the temple is that jaggery is not added. And the very traditional way
you would have seen how Madhuvashan, instead of using a spoon, is using the dried outer covering of the coconut flour to stir the contents of the pot inside the on the fire, on the holy fire. The traditional way of offering Pongala, which you can see is being done by majority of the devotees, is by using red colored earthen pots, which symbolizes the human body. The rice symbolizes the mind, which boils, and it signifies the destruction of ego, which results in the mind and the body being filled with happiness. That is represented by jaggery. And the devotees, through the offering of Pongala, not just for them, not just for their family members, but for the benevolence of the entire universe, would attain self-actualization with the blessings of the Amma, the Devi. As we see a visual, a long shot of the colonial style magnificent building, which is the Trivandrum Central Railway Station, and back to the Palavangadi Ganapati Temple. The temple is manned by the Indian Army, specifically the Madras Regiment. And behind the Ganapati Temple, you would see the tall, resplendent, golden tower of Sri Pattanabha Swami Temple, with, as we would get a closer shot, we have been getting closer visuals of the Pattanabha Swami Temple tower, the Gopuram as we call it. We can see the 7 resplendent domes on top of that. We are waiting for that moment where the white foam would spew forth and outside the Pandara Adupu, the Holy Hearth. And that is a very important moment, because the belief is that the foam should spill out and spill over and fill the hearts and minds of all the devotees with good health, prosperity, everything that symbolizes goodness of life. And there's the moment as the white foam now spills out and on to the holy fire, and this symbolizes the moment. You can see the traditional way in which instead of a spoon, the dried outer covering of the coconut flour is used to stir the contents, and then we have the scraped coconut, which is now being added, and also sliced plantain. No jaggery is added for the Pongala which is offered at the temple, whereas when we look at all the devotees who offer the Pongala, they would be adding embellishments like the sweeteners like jaggery. They would be adding sugar crystals and dried raisins and cashew nuts, but not at the temple Holy Hearth. जिस घड़ी का बड़े बेचैनी से इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई। मुख्य पुरोहित के सामने जो चूल्हा जल रहा था, उसके ऊपर चावल पक रहा था, पक के वो उबल के आ गया। उबल के जब ऊपर से उबल के वो हंडी के बाहर आ गया, तो ऐसा लगता है कि पूरे भक्त के दिल में से उमंग बाहर उबल के आ गई, और यही घड़ी के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इस पुण्य घड़ी के बाद उसके अंदर नारियल भी जमाते हैं, और जो मंदिर का अंदर का जो पोंगाला का पकवान होता है, उसके अंदर कभी गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बाहर के जो भक्त लोग पोंगाला बनाते हैं, उसमें ज़रूर वो अब जो देख रहे हैं वो है ये एक बहुत मुख्य विशेषता है इस पोंगाला त्योहार का, जो है अन्नदान।
अन्नदान करना जिस पोंगाला त्योहार का सबसे मुख्य सविशेषता है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं सब लोगों को अन्नदान कर रही हैं और उसके बाद महिलाएं जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका अन्नदान भी करते हैं, उनके बाद उनकी सेवा और मदद भी करते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं जो हमें खिलाते हैं, हमें तंदुरुस्त रखते हैं, उनके प्रतीक ये जो उत्सव मनाया जाता है, उनकी इज्जत में, उनके शान में, उनकी एकता के पास, उनका शक्तिकरण के लिए, और वो अन्नदान करके हमारा पेट भर रहे हैं और हमारा मन भर रहे हैं। शिवे उसके बाद सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। आट्टुकालम्बिकां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। We are looking at certain historic symbols from East Fort in Thiruvananthapuram, and this area is called Kizhake Kota. Kizhake means east. It's a historical cultural landmark built by King Martandavarma during the 18th century to protect the Sri Padmanabhaswamy temple. It was used as a defense strategy against invasions and houses several royal palaces. It has 16 watchtowers. I'm talking about the East Fort, which we saw just now, and back live at Attukal. This is again the East Fort, where you see a watchtower. There were 16. There are 16. Watchtowers, which again form part of the massive walls of the fort, made of laterite stones and over 30 feet tall. The entire East Fort is
a mile in circumference. And back at the Holy Hearth, where a few moments ago we saw the white foam from the rice which was boiled to perfection, spewing out, and then scraped coconut, sliced plantain and ghee were added. Jaggery is not used here at the Holy Hearth. The Pandara Adupu, as we call it in Malayalam, a dried outer covering of the coconut flour is used to stir the contents. To keep the fire burning, devotees use dried coconut palm leaves. You can see them adding them once in a while to the fire. They also use dried outer covering of the coconut flour. So after preparing the basic offering, which is the white rice, majority of the devotees have moved on to preparing other items, precisely 3 more items: payasam, the terali and the mandaputta. The terali is a sweet made of rice powder and jaggery, steamed in cones made of aromatic vaina leaves. And this is a view of the young lady who was part of the Talapuli offering at the festival this morning. The Talapuli is performed by young girls below the age of 12 years. We see mandaputta being made. Mandaputta is a traditional steam ball made with rice flour, green gram, the powder of that is used, green gram powder, that is jaggery, scraped coconut and cardamom. And the speciality of mandaputta is that the belief is that any ailments connected with the head, like migraine or headache, persistent headache, gets relief through the offering of the mandaputta. The traditional use of the red colored earthen pots on red bricks made of clay. On the left, the Ponnara Sridhar Park at Tambanur, right in front of the Trivandrum Central Railway Station, comes into view. It's on the left of the screen. More than 3,000 policemen are on duty today, and they have been on a vigil particularly since yesterday, although they've been there over the last 9 days of the festival. The festival started 9 days ago on the 5th of this month and culminates tomorrow with a procession, which we'll talk about in detail later. And this is the Annadanam. The Annadanam at the temple. The Annadanam is done also at various points in the city by social organizations, by temple trusts, devotees. Many devotees make the offering of the Pongala at their homes, where they invite people, their friends, relatives. Anybody can walk in today. That's the speciality of the Pongala day, and they can come from anywhere. Many of them congregate in Trivandrum city today, coming from various parts, not just from Kerala but across the country, because we're talking about 40 lakh ladies alone offering Pongala within the 58 wards of the city. 40 lakh women alone. And now, side by side, you consider the fact that Trivandrum has a population of around 12 lakhs. And we have 40 lakh women alone here. So you can then imagine the flow of devotees into the city. All the roads leading to Attukal, it's a holiday today, naturally. And everything is centered around the Attukal Pongala festival, as the Pongala at the Pandara Adupu, the Holy Hearth, is now reaching the finale of it being cooked to perfection. And once that is done, then we will see the Holy Hearth being taken inside the temple and offered to the Devi
in the sanctum sanctorum. We see a lamp there, lit beside the hearth of a devotee. This is again traditional because the start of the preparation of the Pongala is done by lighting a lamp and then making an offering, prayers, invoking Lord Ganesh, and then the devotees go on to the preparation of the Pongala as it is done at the Attukal Temple. The preparation is over. The holy hearth has been covered with a plantain leaf, and in a few moments the Pongala will be taken inside the temple. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ अब ये पोंगला प्रतियोगिता भी हासिल है इसमें। इस त्योहार के दौरान पोंगला तैयार करने का एक प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाता है, जिसमें महिलाएं अपनी पोंगला तैयार करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इससे ये पोंगला का त्योहार का सुबह का जो दृश्य अभी ख़त्म होने वाला है। पोंगला का पकवान हो गया, आपस में बंटवारा हो गया, सब लोग बड़ी भक्ति के साथ प्रसाद के रूप में उसको लिए, भक्षण किए और अपनी तमन्नाओं को, अपने अरमान को, अपनी मन्नत को देवी के चरणों में रख के प्रार्थना करके अभी वो पूरी तरह से इस पोंगला का मज़ा लेकर और पोंगला का भक्ति भर का उसका जो आत्मनिर्वृत्ति है वो लेकर जा रहे हैं। पोंगला चलाने वालों को व्रत का अनुष्ठान भी करना चाहिए। आत्मा को देवी को समर्पित करने से पोंगला और भी दीप्तिमान हो जाता है और इसलिए 3 दिन से लेकर 9 दिन तक का व्रत अनुष्ठान करके महिलाएं आके ये जो पोंगला पूरी दीप्तिमान होने के बाद, उनकी मुरादें हासिल होने के बाद वहाँ से वापस जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध आट्टुकाल श्री भगवती मंदिर का इस 10 दिन का त्यौहार होता है और इसके 90 दिन यानी कि मलयालम के कुंभ मासम के ये पूरम नक्षत्र में यानी कि पूर्व फाल्गुनी में महिलाएं पोंगला बनाकर देवी को समर्पित कर दी है। इस साल ये मार्च 5 से लेकर 14 तक है और आज नवीन दिन यानी कि मार्च 13 को पोंगला तैयार हो गया और महिलाओं ने जाति और धर्म और मज़हब के भेदभाव के बिना देवी को अर्पित कर दी है। और पोंगला का दिवस पर एक मिट्टी से बनाई हुई नई बर्तन जिसको हंडी कहा जाता है, इस हंडी में जिसे शरीर के रूप में माना जाता है और भौतिक मोक्ष को प्रतीक में चावल और वगैरह वगैरह डाल के, जैसे कि नारियल या गुड़ वगैरह डाल के पकाते हैं और इस पोंगले को अर्पित करके आज इस महिलाओं ने ये बताते रहे कि उनका शक्तिकरण, उनके समाज में उनकी जो प्रतिनिधि है, जो वो लोग हमें खिलाते हैं, जो परिवार की रक्षा करते हैं, उनके लिए पोंगला के आट्टुकल भगवती की हिफाजती की तमन्ना लेके वो लोग आज वो पोंगला बनाकर अर्पित करके दुआ मांग रहे हैं। अब जो विजुअल्स जो देख रहे हैं वो है आप गणपति मंदिर के पास के विजुअल्स हैं। पड़वंगाड़ी एरिया, इस इलाके का नाम है पड़वंगाड़ी, गणपति मंदिर के पास में है। थोड़ी देर पहले आपने एक दृश्य देखा था जहां the devotees are now awaiting the time when
The holy rose water from the sanctum sanctorum would be sprinkled on the pongalas prepared by them, and as would be done by over 300 priests who would go across the 58 wards of Trivandrum. That would happen around 1:15 p.m. today, and we would be bringing you visuals of that holy moment also, as we see the magnificent Gopuram of the Attukal Bhagavathy Temple in resplendent Dravidian style, as we say farewell to you for the time being with the prayers to the Devi and blessings from the Devi for all of us. Attukalam गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय